Hi students, so welcome to everybody right there. Welcome back. A very good afternoon to everyone right there. And just give me a confirmation in the comment section that you all can see me well and you all can hear me well too. So warm welcome to you all once again to the very session, everybody. I hope that everyone is really doing good. Alrighty. Okay, so hi and hello. Hi, it's good afternoon now. No Menti, guys. We are going to have Menti. Hey, Panishar. Hi, good afternoon. Hi Chanchal, hi Manvi, a very good afternoon. Good afternoon, everybody. Welcome to the very session. I hope that you all did really understand whatever we did like an hour ago, and now we are going to do the next part of the chapter, A Letter to God. So make sure that you're staying tuned and you all are listening to me very carefully and you're understanding everything in one go. Hey Ayushi, good afternoon, everybody, and kindly quickly share the link of the session with all your friends so that they can also continue because this is very important for all the students to just continue with what we are doing without a miss because as I said earlier, all the sessions they are going to have a link with one another. So make sure that you all are understanding everything. Hey Rashi, hi dear. Yeah, of course, I do remember you. Very great, Rashi. That's really amazing. I really hope that you get so amazing marks in your term. Do let me know whatever your score would be, okay? I hope that you're doing good. Abhishek, thank you, dear. Hey, crack all exams. A very good afternoon to you, too. Okay. Hi, Mohammed. Hello. Good afternoon. Hey, Simran. A very good afternoon, everybody. A very good afternoon to everyone right there. Okay, so alrighty, here we go. Thank you, Vishek. Thank you so much. So everyone, I hope that you all attended. Can you please give me your attendance kind of thing? Like just give a thumbs up or like a heads up or like anything, a heart or anything in the comment section so that I'll come to know that of course you guys attended the class an hour ago because I'm gonna ask certain questions. So I want all of you to give me the answers for all those questions. So immediately, quickly let me know in the comment section. Be quick. Yes, you were there. Okay, alrighty, here we go. Yeah, Rashi, no, my dear, not 11th standard. Alrighty, so you guys were there. Okay. See, my timetable for class 10th is, as I said in my previous class, we are going to conduct the classes at 2 p.m. on a daily basis on weekdays, and on weekends the timings may differ, and usually on weekends I'll be coming up with the very basic kind of a sessions for all of you wherein you all can work on developing your communication skills, your knowledge about English, your vocab, and all. So the timings may vary. It can be 10 a.m. in the morning, can be 11 a.m. in the morning. Okay, so just make sure that you're staying updated. Alrighty, okay, everybody. Alrighty, people, thank you for giving me the confirmation in the comment section. Let's begin now. Alrighty, I'm sure you guys know my name. My name is Preksha Sharma, and as I said earlier, I've done Masters in English from Delhi University, and I've been guiding a lot of students for the past few years to be like super duper amazing in their communication skills. I'm sure I'm gonna help you guys as well. And along with that, this is really very important that we score good marks in our academics also. So we are gonna maintain a balance between the both so that you guys really become so good at English. ओके यार स्पेशल क्लास आज होगी रजत बेटा सही 2 बजे स्पेशल क्लास है 2 से 3:30 तक हमारी स्पेशल क्लास चलेगी ऑल राइट सो वहां पे आना जरूर ओके अभिषेक थैंक यू डियर Hey Aditya, hello. Hi Simran. Hello P Studio. Hello. Hi AK. Good afternoon. Good afternoon, everybody. A very good afternoon. Alrighty, so moving ahead, let's make a move, everyone. Okay, please make sure that you're joining the Telegram channel because herein all the educators they'll be sharing the updates related to all the upcoming sessions. So kindly don't miss that. Okay, be updated, start doing everything right from the beginning so that you'll come to know about everything. Hi, crack all exams. Hi, Akshita. Ayushi, I had given you an example if I'm saying that he is a tiger. Okay, so यहाँ पे मैंने ना like यूज किया ना as यूज किया मैंने indirectly उसे tiger बोला यानी कि मैं ये बोल रही हूँ वो बहुत strong है बहुत ferocious animal है. Okay, आई मीन फिरोशियस इंसान है बहुत हिम्मत वाला इंसान है ठीक है लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ ही इज लाइक अ टाइगर तो मैं यहाँ डायरेक्टली कंपेयर कर रही हूँ लाइक यूज करके और इफ आई एम सेइंग दैट ही इज एज ब्रेव एज अ टाइगर तो यहाँ पे भी मैंने ब्रेवरी ओके इसकी ब्रेवरी मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने सहदेव की ब्रेवरी कंपेयर कर ली है टाइगर की ब्रेवरी से सहदेव इज एज ब्रेव एज अ टाइगर सो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कंपेयर किया तो जब भी आप डायरेक्ट कंपेयर करते हो यूज करके दो शब्द दैट इज लाइक और एज दैट इज ऑलवेज सिमिली बट when you are not using these two words and you are saying that Sehdev is a tiger, that means I'm indirectly comparing the qualities of Sehdev with that of a tiger. So that is metaphor. All right, is that clear to everyone? Yes, clear to everyone? Okay, moving ahead, guys. Special classes, they're always good. Okay, I've been saying this that these are the free classes. You all can always use the code PSH10 and you can meet me in the special classes. And today, the special class is going to be right at 2 p.m. So make sure that you are attending that. Okay, you all can learn from your favorite educators for free.
You all can engage with educators via poll. You all can clear your doubts in the live special classes. And for all the top special classes, you can always visit the link in the description. ओके प्रदीप मैं आपको बताऊंगी बेटा, जब ऑक्सीमोरॉन आएगा मैं बताऊंगी, मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। ऑक्सीमोरॉन होता है जब हम दो एडजेक्टिव्स को, दो ऑपोजिट एडजेक्टिव्स को एक साथ यूज करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑल राइटी, सो अभी स्पेशल क्लास होगी 2 बजे, प्लीज मेक श्योर आप लोग आ रहे हो। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवा दूंगी मैं सारे। ऑल राइट, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लूंगी, सो मेक श्योर दैट यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दैट। ठीक है सिमरन, हम करेंगे वो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, अभी तो नहीं कर रहे हैं। ऑल राइट एंड एवरीवन, मैं एक एक्सक्लूसिव प्लस कोर्स लेकर आई हूँ सबके लिए। कंप्लीट कोर्स होगा इंग्लिश लिटरेचर पे, क्लास 10th के लिए, बैच 2022-23 स्टूडेंट्स के लिए। कल से स्टार्ट हो रहा है, शाम को 6:30 बजे क्लास होगी ऐप पर। ठीक है, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, आई मीन, और इफ यू हैवंट टेकन द सब्सक्रिप्शन येट, फटाफट से ले लो, क्योंकि हमारे कोर्स के जितने भी प्राइसेस हैं दे आर गोइंग टू इंक्रीज सून। सो काइंडली यूज द कोड PSH10। ठीक है, इससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा एंड यू कैन बी देयर। ऑल राइट पीपल, इज दैट क्लियर? तो और लेटर टू गॉड करते हैं हम। मैं फिर से आपको ये बात रिपीट करके बता देती हूँ दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर द नेम ऑफ द चैप्टर द राइट वे। इट्स अ लेटर टू गॉड। इफ यू आर राइटिंग और कोटिंग द नेम ऑफ द चैप्टर इन योर आंसर्स, you are not supposed to write it like this, the letter to God, or just letter to God. You have to remember it like this, a letter to God. Okay, this is part 2, line by line explanation, and it has been written by GL Fuentes. Kindly remember, okay, kindly remember the class, sorry, kindly remember the name of the author correctly. Okay, it's really really important. Alrighty, no आयुषी my dear, जो स्पेशल क्लास होगी बेटा वो ऐप पर होती है। ठीक है, प्लस कोर्स भी जो है वो ऐप पर होता है। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। ऑलराइट, ओके, सो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो वेयर डिड वी लीव? Who is going to tell me where did we leave in the previous class? Yes, tell me in the comment section. Where did we leave, everybody? Let me know in the comment section, please. Who is going to let me know about the same? Who all were there? Come on, quickly. Tell me, where did we leave, guys? You all need to understand this the right way. Where did we leave? Anyone writing anything? So that I can get an answer. Lencho, yeah, Sanya, you're right that Lencho decided to write a letter, and though he was an ox of a man, he had worked like animals in the fields, but still he knew how to write, so he decided to write a letter, and he was writing the letter to God. Okay, that's what you guys will have to remember. Okay, now let's see that what did he do. आप क्या करेंगे? जो उसने लेटर लिखा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। How does he start? He start with this, and this is in your double inverted commas. That means कि अब ये directly बोल रहा है। God, he wrote, then comma, and then again. If you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. ऑल राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, उसने ये लिखा, भगवान अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रहेंगे। मुझे आपसे 100 पीसोस चाहिए। पीसोस क्या है? पीसोस हमारी करेंसी है, मतलब करेंसी है ये लेटिन अमेरिकन कंट्रीज की। हमें करेंसी के थ्रू पता चलता है कि जो हमारी हमारी जो स्टोरी है वो लेटिन अमेरिकन कंट्री में सेट हुई है। ठीक है, तो उसने कितना डिमांड किया? उसने डिमांड किया 100 पीसोस। इसलिए उसने रीजन भी दिया, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मतलब कि मुझे फिर से बीज बोना है अपने खेत में। ठीक है, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, यानी कि मुझे किस लिए चाहिए? उसने 100 पीसोस किस लिए मांगे? क्योंकि मुझे बीज बोना है, उसके लिए भी मुझे पैसा चाहिए खेत में, और साथ के साथ जब तक वो क्रॉप पूरा तैयार नहीं हो जाता तब तक मुझे जीने के लिए भी पैसा चाहिए, मुझे अपनी फैमिली को खाना खिलाना है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से। अब ये आगे जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स का ये मतलब है कि आगे भी उसने कुछ लिखा है विच इज नॉट शोन टू अस इन द गिवन चैप्टर, but it is giving us an indication that in the letter what did he write? He had demanded 100 pesos. Also he had stated the reason for demanding the money. All right, this is what you have to write. How do we come to know about this? Menti beta, menti नहीं है। menti, आप menti कब होती है? menti तब होती है ना जब हम चैप्टर समझ चुके होते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैप्टर को समझ रहे हो अच्छे से, क्योंकि एक बार चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा देन यू कैन डू वेल। All right, is that making sense to everybody, Ragini? That's really amazing there.
So what are you gonna supposed to do here? Just make sure that you are understanding what I'm telling you all here. It's really really important. People don't take it lightly. All right, because end में जाके आप लोगों के लिए बहुत difficult हो जाता है सब कुछ समझना, and that is where comes the problem. ऑल राइट, ठाकुर जी गेमिंग अब बोलेंगे बेटा, क्या बोलना चाहते हैं आप? तभी मुझे सुनाई देगा ना, आई मीन दिखाई देगा. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, what did he write in the letter? This is a question that comes in your examination. So in the letter he had demanded 100 pesos in order to sow his field again and to live until the next crop comes, and along with that he had also stated the reason for demanding the 100 pesos. Okay, because here it says no, because the hailstorm, though we do not know what did he write, but he had written something, and this is so very much evident right from these dots which are being given here. All right, is that clear everybody? Right? Okay, so we see what did he write. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to the town. So this is really very important. What did he do? Like, he had addressed the letter to God. All right, he had written on the very envelope of the letter, he wrote to God. And what did he do? That inside the envelope, he had put the letter that he had written, and still he was looking troubled. This is again a very good question, that why was he looking sad and troubled even after writing the letter? Because he was not sure that when exactly he's going to get the reply for that, and he was really sad and in grief. Okay, so where did he go? He go to the town. Okay, he went to the town. All right, he goes to the town. At the post office. अब यहाँ पे at क्यों लगाया है? जब आप एक टाउन के अंदर, एक सिटी के अंदर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हो, यानी कि बड़ी जगह में किसी एक छोटी जगह की बात कर रहे हो, तो हम हमेशा प्रीपोजिशन एट यूज करते हैं. द उसके साथ इसलिए लगाओगे क्योंकि अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर प्लेस. सो एट द पोस्ट ऑफिस व्हाट डिड ही डू? ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर. तो उसने स्टैम्प लगाई. लेटर पे स्टैम्प हम करते हैं जब भी हम पोस्ट करते हैं कुछ भी, उस पे स्टैम्प लगती है. और उसने क्या किया? एंड ही ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन इनटू क्यों आया? मैंने क्या आपको बताया था, अगर आपने मेरी क्लासेस पिछले साल अटेंड करी है, तो इनटू एक ऐसा प्रीपोजिशन है अगर आप किसी चीज की मूवमेंट कर रहे हो. ऑलराइट, अगर आप किसी चीज की मूवमेंट कर रहे हो, आप यहाँ से उठा के चीज यहाँ रख रहे हो, ठीक है, तो उसमें मूवमेंट आ रही है. सो इन दैट यू आर सपोज टू यूज इनटू. ऑलराइटी, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? Yes, making sense to everyone. So what did he do? That he placed a stamp on the letter, all right, and he had drop मतलब कि उसने उसमें डाल दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया. ठीक है, कहाँ डाला? हम लोग बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हैं इसलिए हम द लगा रहे हैं. So where did he drop it? He had dropped it into the mailbox. If you're writing it like this, that he had dropped it in the mailbox, you're wrong about it, because there was a movement in the envelope from Lencho's hand into the mailbox. Is that clear to everybody? Are you all understanding that? समझ आया क्या किया उन्होंने? उन्होंने लेटर पे लिखा टू गॉड, ठीक है, और लेटर को एनवलप में डाल दिया और मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया. इज दैट क्लियर? यस. आयुषी बेटा, इन होता है जब मैं एक नॉर्मल जगह की बात कर रही हूँ. मैं आपसे अगर पूछ रही हूँ कि वे आर यू सिटिंग, ठीक है, आप बोलोगे आई एम इन द क्लासरूम, मैं क्लास के अंदर बैठी हुई हूँ. जब आपकी जो पोजीशन है वो किसी भी चीज की पोजीशन फिक्स्ड होती है. लेकिन जब आप इनटू तब लगाते हो जब एक जगह से दूसरी जगह चीज जा रही होती है. कि मैं क्या कर रही हूँ, मम्मी मैं ये बुक्स कहाँ रखूँ? मम्मी कह रही है बेटा ये बुक्स ना कबर्ड में रख दो. सो पुट द बुक्स इनटू द कबर्ड. ठीक है, तो बुक्स टेबल से उठ के कबर्ड में जा रही है, वहां पे मूवमेंट हो रहा है, वहां पे इनटू लगाते हैं. ठीक है, इज दैट क्लियर? Hi Seema, hi, yeah, hi Disha, how have you been? I hope all your exams went well. ठीक है, is that clear बेटा? दीपक इंग्लिश की क्लास है, try to understand in English because English is one of the very important languages which connect you globally with the world. All right, is that clear everyone? May I make a move ahead? This is very important. What did he write in the letter? चलें आगे. सबको क्लियर है? Yes or no in the comment section guys, be quick. चलते हैं फिर अब हम. Now, what happened is one of the employees, please make sure कि आपको ये बात समझ में आ रही है. One of the, ये मैंने आपको subject verb agreement में भी समझाया. One of the एक ऐसा expression है जिसके बाद जो आपका noun आता है वो हमेशा plural आता है. ये बात मैं अभी भी समझा देती हूँ आपको chapters में, जिससे कि आप लोग relate कर पाओ जब मैं grammar समझा रही हूँ. All right. सो वन ऑफ द, क्यों? क्योंकि आप सब में से एक की बात करते हो तो आपका जो नाउन है वो प्लूरल है. यहाँ पे ये देखो प्लूरल आया है.
ठीक है, लेकिन इसके साथ हमेशा जो आप वर्ब यूज करोगे वो सिंगुलर यूज करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपने एक की बात करी बहुत में से। ठीक है, सो वन ऑफ द एम्प्लॉयज, अब यहाँ पे कमा लगाया, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, हु वाज अ पोस्ट मैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज यानी कि एक पोस्टमैन था और वो हेल्पर भी था पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, वेंट, अब वेंट ये पास्ट टेंस में है तो ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल नहीं देख रहे हो, सिंपल पास्ट टेंस में लगा रहे हो। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली, लाफिंग हार्टिली का मतलब, हार्टिली मतलब बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ, ऑल राइट, वो हंसने लगा और उसने वो लेटर दिखाया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। ऑल राइट, वो क्यों हंसने लगा, क्योंकि उसको ये दिखा कि ये वाला लेटर एड्रेस्ड है किसको, गॉड को। ऑल राइट, सीमा, ग्रेट 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 देयर। और क्रिश बेटा क्या रिपीट करूं, जस्ट लेट मी नो दिस, so what really happened, okay, all right रजत बेटा, इसलिए लिया गया टाइम क्योंकि कुछ चीजें हो रही थी, so that is why we were just deciding like when to come up with it, but don't worry now since the course has begun, so you can go ahead with it, that's not problematic. all right, ओके, अंदर पोस्टमैन का ये मतलब होता है कि जो सिर्फ संदेशे पहुंचाता है, पोस्ट मास्टर वो होता है जो वहां का हेड होता है उस पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्टमैन होता है जो सिर्फ क्या कहते हैं, हेल्प करता है या फिर थोड़ी बहुत चीजें देखता है एक पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट मास्टर होता है जो हेड होता है पोस्ट ऑफिस का। All right. Is that clear, Mahi? I hope that you're gonna enjoy it. So what do we see? We see that finally, what did he do? The postman who was also a helper. अब यहाँ पे देखो बेटा, जब भी हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं ना किसी चीज को, यहाँ पे एक कमा है, एक मैं एक बार इसे इरेज करके आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे ना एक कमा लगाया गया है, ठीक है, कमा यहाँ पे लगाया गया और यहाँ पे भी कमा लगाया गया है, तो हमने ये कमा में रखा है। ठीक है, मैं इन्वर्टेड कमा नहीं कह रही हूँ, कमा में। तो यानी कि जब भी आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना होता है या रिलेटिव प्रोनाउन होता है, आप उसको हमेशा एक कॉमा में रखते हो, कि जो एक पोस्टमैन भी है और एक पोस्ट हेल्पर भी है, सॉरी पोस्टमैन और हेल्पर भी है, वो अपने बॉस के पास गया, यानी कि पोस्ट मास्टर के पास गया। ठीक है, और बहुत ज्यादा हंसते हुए गया और उसने लेटर दिखाया जो भगवान को भेजा गया है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी भी अपने करियर में ऐसा कोई एड्रेस देखा नहीं और ना ही उसे पता था। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्रिश, इसमें यही है बेटा, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वन ऑफ द एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके साथ हम हमेशा प्लूरल नाउन यूज करते हैं, और हम हमेशा कमा में वो चीजें लिखते हैं, जैसे कमा, कमा के अंदर ये आया ना, जब हम एक रिलेटिव प्रोनाउन, एज इन जब मैं डिस्क्रिप्शन देना चाह रही हूँ जो मैंने पहले लिखा है उससे रिलेटेड। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ आ गया? नहीं आयुषी बेटा, नहीं आ सकता है, ठीक है, वो मैं क्यों यहाँ पे एट द पोस्ट ऑफिस लगा रही हूँ, क्योंकि मैं टाउन के अंदर एक पोस्ट ऑफिस है उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हेल्प वहां पे मिल रही है। ठीक है, हमेशा लिंक होता है पहले वाले सेंटेंसेस से, चलते चलो और समझते चलो। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब हम क्या करते हैं, द पोस्ट मास्टर, ओके, ये बॉस था पोस्टमैन का। ठीक है, अब यहाँ पे एक डैश फिर से दिया गया है, क्यों दिया गया है, क्योंकि अब हम पोस्ट मास्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कैसा इंसान था, एक फैट, एक मोटा सा इंसान था, एमिएबल फेलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई एडजेक्टिव्स, गाइस प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी nicely, that whenever an adjective is given in any of the chapters in the context of a character, you guys will always have to remember those adjectives. Okay, they are very important when it comes to write a character sketch about the character, also when you are writing an answer also, then also it is important. ऑल राइट, करियर मतलब कि अभी तक की जिंदगी में, अभी तक की नौकरी में उसने ऐसा आज तक कोई एड्रेस नहीं देखा था। ओके okay? तो यानी कि पोस्ट मास्टर कैसा था, प्लीज डोंट राइट पोस्टमैन, ही वाज अ पोस्ट मास्टर, दैट मींस ही वाज द बॉस। ऑल राइट, तो वो कैसा था, वो एक मोटा सा था बट एमिएबल, एमिएबल मतलब बहुत फ्रेंडली था, फ्रेंडली फेलो मतलब अ ह्यूमन बीइंग। ओके, ऑल राइट, ऑल्सो आप इसको आगे डैश और दिया डिस्क्राइब करने के लिए, ऑल्सो, ऑल्सो मतलब वो भी, ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट लाफिंग मतलब बहुत तेज हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, तो यानी कि वो जल्दी ही फिर से एकदम से सीरियस हो गया। एंड के बाद हमने कॉमा यहाँ लगाया क्योंकि अब हम एक बात चेंज कर रहे हैं, हंसी से कहीं और जा रहे हैं।
एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कॉमेंटेड, यानी कि उसने ऐसे, मतलब ऐसे आप कोई चीज रखते हो डेस्क पे तो ऐसे रखा, ठीक है, एंड कॉमेंटेड, कॉमेंटेड मतलब और बोला, ठीक है। बोलने के लिए अब ये रिपोर्टेड स्पीच है तो आप कमा लगा के इन्वर्टेड कमा, आई मीन डायरेक्ट स्पीच आप लिख रहे हो तो आप इस तरीके से लिखते हो, वॉट फेथ, यानी कि क्या यकीन है, ठीक है, एंड देन एक्सक्लेमेशन. Why? Because he was so shocked looking at the faith of a person. He was so shocked that somebody has written a letter to God. So that was the shock, and out of the shock he said, "What faith?" मतलब कि क्या यकीन है, इसलिए यहाँ पे exclamation लगाया गया है. ऑल राइट, इज दैट क्लियर? दर्शील दो डैश इसलिए दे रखे हैं बेटा, पहली बात तो पोस्ट मास्टर को डिफाइन किया कि वो फैट एमिएबल है, उसके बाद डैश इसलिए दे रखा है क्योंकि अब जो एमिएबल फेलो है उसने क्या किया वो भी डिस्क्राइब करने के लिए एक डैश दे रखा है, ठीक है। यस आयुषी, पोस्ट मास्टर इज ओनली फैट. फिर उसने कहा आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर. वो कह रहा है कि आई विश, कि मैं, मतलब मैं ऐसा सोचता हूं कि काश मेरे पास भी ऐसा यकीन होता जैसा इस आदमी के पास है. ऑल राइट, so this is a very important statement. How did the postmaster react on receiving the letter? What did he say? So the postmaster also started laughing on seeing the letter addressed to God, but immediately he turned serious and he said, "What faith! I wish I had the faith of the men who wrote this letter." So guys, whenever you're gonna quote the direct words of the speaker in your answers, just listen to me very carefully. Whenever you guys are gonna quote the direct words of the speaker in your answer sheet, you'll always have to keep it under double inverted commas. All right, it's really, really important. Is that clear? Now he says, starting up a correspondence with God, and then exclamation and the inverted comma clauses. So correspondence basically means communication by exchanging letters. He is like कि काश मेरे पास भी इस आदमी जैसा यकीन होता जिसने डायरेक्टली बात करना स्टार्ट कर दिया भगवान के साथ ही, ठीक है। सो स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब स्टार्टिंग अप मतलब शुरू करना, चालू करना, क्या अ कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब अ कम्युनिकेशन, बातचीत किसके साथ, गॉड के साथ, एन एक्सक्लेमेशन. यहाँ पे एक्सक्लेमेशन क्यों आया, क्योंकि ही इज शॉक्ड, ही इज अगेन शॉक्ड दैट ही इज राइटिंग अ लेटर डायरेक्टली टू गॉड. What a belief. So that was a shocking thing, and that is why we have got the exclamation here. As you know, the exclamatory sentences, they always deal with your shock, your state of excitement, or a state of grief or sadness. So shock is one of the things here. Is that clear to everybody? Are you all understanding that, guys? Am I making sense to everybody right there? Right, clear? Now we are moving है. So अब कमा यहाँ पे आया, in order not to shake the writer's faith in God, इसलिए भगवान में राइटर का फेथ हिलाना नहीं चाहता था वो, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. अब आइडिया के बाद यहाँ कोलन इसलिए दे रखा है बिकॉज ही इज डिस्क्राइबिंग कि आइडिया क्या है. हम यहाँ पे द आइडिया नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि हम पर्टिकुलर नहीं है, हम बस एक बोलेंगे, एक आइडिया आया एंड लगाया. आंसर द लेटर, उन्होंने कहा कि हम आंसर करेंगे लेटर को, ठीक है. बट व्हेन ही ओपन इट, उसने सोचा कि ठीक है मैं ना आंसर देता हूं इस लेटर का, लेकिन जब उसने लेटर खोला तो क्या हुआ, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. सो ही वॉज लाइक कि ये बहुत ज्यादा अच्छे से दिख रहा था, क्लियरली सीन. एविडेंट का मतलब क्या होता है, जो क्लियरली सीन है या फिर अंडरस्टूड है या ऑब्वियस है, कि उसको गुडविल से ज्यादा, गुडविल मतलब कि एक नॉर्मल फ्रेंडली आंसर या फिर एक नॉर्मल हेल्प या एक नॉर्मल एक एटीट्यूड, ठीक है, या फिर एक नॉर्मल सी चीज या फिर इंक और पेपर नहीं चाहिए था. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. तो यानी कि क्या था, उसको ये दिख गया था कि वो क्या डिमांड कर रहा है. ही वॉज डिमांडिंग 100 pesos. So he was like, let's answer this very particular letter, because he didn't want to shake the faith of the writer in God. So he was being very kind. He was being very nice. He was a good person by heart, because he was a total stranger to Lencho. All right, if he wanted, he would have definitely ignored the letter, but he didn't do that. Why? Because he really wanted to maintain the person's faith in God. He wanted to keep Lencho's faith intact. Okay, what does that mean? He didn't want Lencho's faith to be destroyed or devastated.
All right. So he stuck to his resolution. That means कि वो अपनी बात पे अड़ा रहा, डटा रहा. Resolution means a firm decision to do or not to do something. So what did he do? He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So this is very important. Okay, what did he do? He was asking the employees. He was the boss therein, so he was asking all the employees right there to just contribute some amount. Okay, छोटा मोटा थोड़ा सा amount दो जिससे कि इसको help हो, 100 pieces हो सके. उसने गेव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी का मतलब कि अपनी सैलरी में से भी कुछ पैसे निकाल के दिए, और सेवरल मतलब और काफी अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ली कि मतलब कि आप हमें थोड़े से पैसे दो. ठीक है, ऑब्लाइज मतलब कि वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा था कि उसके फ्रेंड्स भी उसकी हेल्प कर रहे हैं, टू गिव समथिंग. एंड ये एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिया जा रहा है फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब दान के लिए. ठीक है, किसी की हेल्प के लिए. ऑल राइट, सो दैट इज व्हाट दे सेड. All right, is that clear? Yes. Yes, Ayushi, postmaster was a very kind person, as the word amiable has been used, which means that he was a very friendly person. He was very kind hearted. He was helpful in nature. Okay, though he was the boss. Okay, if he wanted, he could have really ignored the very letter, but no, he was very much keen in helping the person because he wanted to keep the faith of Lencho intact. He wanted to keep the faith of Lencho in God. All right, so now what do we see? That he was keeping it he was trying to help him as an act of charity. Okay, कि दान कर रहे हैं हम, किसी की मदद कर रहे हैं. ठीक है, so he was being very nice. Clear? सबको clear? Is that clear, everybody? Is that clear to everyone? Yes, guys, come on. Priyanka, that's really so sweet of you, dear. Is that clear? मैं आगे बढ़ूं? सबको आया समझ? कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी के अभी. You have got a golden chance. Yes? Okay, all righty, ठीक है. पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ गेव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी का मतलब उसने अपनी सैलरी में से भी कुछ अमाउंट दिया. ऑल राइट, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम हेयर रेफर्स टू द पोस्ट मास्टर. जहां पे भी आप पोस्ट मास्टर यूज करोगे आप हमेशा आर्टिकल द लगाओगे. क्यों? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं. ओके, फॉर हिम टुगेदर मतलब टुगेदर मतलब कि एक साथ सारे 100 पीसेस इकट्ठा करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ. यानी कि अ लिटल मोर देन हाफ. वेरी इंपॉर्टेंट पीपल. ओके, देखो क्या एक्सप्रेशन है, अ लिटल मोर देन हाफ. ठीक है, यानी कि आप मुझे क्या पता चला कि हाफ हमारा कितना हुआ, 50 पीसेस, राइट. ठीक है, आप यहाँ पे मोर देन का मतलब है कि 50 पीसों से तो ज्यादा ही है, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा है. अब यहाँ पे मैंने अ लिटिल लगाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए एवरीवन. अ लिटिल का मतलब होता है कि थोड़ा ज्यादा. ठीक है, वी आर नॉट बीइंग टोल्ड कितना, बट हमें पता चला है कि अ लिटिल मोर. Okay, so he put the money in an envelope addressed to Lencho. यानी कि किसको गया? To Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature God. ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट आपके चैप्टर के लिए. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. या आयुषी बेटा, बाद में हमें पता चलता है कि 70 पीसोस, लेकिन अभी हमें नहीं पता चलता है. ऑलराइटी, so what do we see? That he had signed the letter as God. So this is reflecting the true spirit of a human. All right, so this shows the humanity. All right, in this chapter humanity is being portrayed by the postmaster. Please remember this. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ. ह्यूमैनिटी का जो एस्पेक्ट है, ऑल राइट, दैट इज बीइंग शोन वाया पोस्ट मास्टर. All right, that humanity prevails, the people they help. Okay, people tend to help, people are being kind. All right, is that making sense to everybody? Are you all understanding this?
Yes. So what did he do? He had signed the letter as God. Why? Because he wanted to not shake the faith of Lencho in God. He wanted Lencho to believe in the presence of God. He wanted that it is actually God who is helping him. Because Lencho was a very innocent person. He was very simple at heart. He was a true believer in God, and he was someone who could just rely on God. Rely means to believe in God. Okay. So this person, he was indirectly helping him, and he wanted Lencho to realize that it was the help from God that came to him. And that is why he signed the letter as God. Okay. So this is really very, very important. Okay. दीपक मैंने यही बताया ना बेटा आपको उसने मनी इसलिए भेजी क्योंकि हमें पोस्टमास्टर की ह्यूमैनिटी दिखाई दी द हेयर इन जीएल फ्यूंटस इज ट्राइंग टू टेल अस दैट ह्यूमैनिटी प्रिवेल्स इन द वर्ल्ड ऑलराइट पोस्टमास्टर वाज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन ही वाज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन ऑलराइट he didn't want to shake the faith of Lencho in God, and that is why he decided to help the person. All right. Also, after reading the letter, he realized that the person really needed help. And that is why, in his innocence, he had written a letter to God directly. Okay, so he realized the gravity of the situation. What does that mean? He realized the seriousness of the situation because he had stated the reason in that letter. All right, though we are not being told about the reason, but we know that he had stated the reason that the family will starve, okay, for the entire year if there would be no money and no crops. All right. Is that clear to you, Deepak? And he had signed the letter as God because, again, he didn't want to shake the faith of Lencho in God. He wanted Lencho to believe that he had received the help right from God. All right. Is that clear, everyone? Yes. Is that clear to everybody? May I make a move ahead? Is that clear? चले आगे आप फटाफट से बता दो. Thank you, Vivek. Thank you so much. Yes, everybody. Clear, P Studio, great. Deepak, Sapndev, Manvi, cool. चलो अब चलते हैं हम आगे. ऑल राइट नेक्स्ट द फॉलोइंग संडे. अब क्या हुआ देखो पिछले संडे उसने क्या किया उसने लेटर लिखा ठीक है और वो देख के आया. अब हो गया है एक हफ्ता ठीक है. सो अब इस संडे जब नया संडे आया लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल to ask if there was a letter for him. All right. So now he came and he wanted to know, all right, he wanted to know that if there was any letter for him. All right. And since he was curious, you know, earlier हमने क्या देखा that he was troubled when he had put the letter into the mailbox, right? So he was really worried. And you know, when you're in a worry situation, you want the things to be sorted as soon as possible. So this time when he came to the post office, all right, he came a little earlier and he was just asking, okay, if there was any letter for him. So it was the postman himself, okay, who handed the letter to him. So अब postman ने क्या किया उसने खुद से वो letter ठीक है उसको दिया while the postmaster. While अब क्यों जब भी मैंने आपको बोला है whenever we are talking about a contrary situation we always use the very word while. All right. Okay. Why he wrote letter on Sunday. Shubh, there is no reason for that, my dear. It was just the thing that the devastation took place on Saturday. So obviously the next day he would have looked for some kind of help. Okay, so the next day immediately he did that. So it was just the thing. All right. निमेश दैट वाज जस्ट वन ऑफ द थिंग दैट ही कंसिडर्ड कि हमें इससे पैसा मिलेगा. उन्होंने वो 10 सेंट्स बड़ी ड्रॉप्स को बोला कि ये 10 सेंट्स जो 10 सेंट्स का कॉइन है वो थोड़ा बड़ा होता है ठीक है और जो 5 सेंट्स का होता है वो थोड़ा छोटा कॉइन होता है ठीक है. सो छोटी ड्रॉप्स को उसने 5 सेंट से कंपेयर किया और 10 सेंट्स का जो कॉइन थोड़ा सा बड़ा होता है उसको वो बड़ी रेन ड्रॉप से कंपेयर किया. दैट्स इट ठीक है. उसको ये लग रहा था कि बस अब हमें क्या कहते हैं हम फटाफट से इसको बदल के पैसा कमाएंगे. इज दैट क्लियर? समझ आया? Nimesh, is that clear? Shubh, postmaster was a very friendly person. He was a kind-hearted person. He was a helpful person. That is what his nature is. Is that clear? Nimesh, आपको doubt clear हुआ? Okay.
अब हम आगे चलते हैं। पोस्ट मास्टर को कैसा फील हुआ? पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग मतलब फेल्ट द कंटेंटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंटमेंट मतलब अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन, मतलब उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन हुई। जैसे अगर आप किसी जो अगर इफ समबडी इज इन नीड, ओके, एंड इफ यू हेल्प द पर्सन, यू फील सो हैप्पी, यू फील सो कंटेंट, you feel so blessed, and you feel like really very elated. So he was feeling so satisfied that we helped someone who was in a dire need of money. So he was so satisfied that he helped a person who has performed a good deed looked on from his office. तो यानी कि अब क्या था कि पोस्ट मास्टर तो वहीं बैठा हुआ था, अब वो आया वहां पे, पोस्टमैन ने उसको दे दिया। अब उसके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन थी कि मैंने एक ऐसे इंसान की हेल्प करी जिसको जरूरत थी, और उसने एक अच्छा कर्म किया, एक अच्छा काम किया। डीड का मतलब क्या होता है? इन एक्शन दैट इज परफॉर्म्ड इंटेंशनली। सो उसने एक अच्छा काम किया, एक पुण्य कमाने का काम किया, एंड ही लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो वो बस अपने ऑफिस में बैठ के ही लेंचो को देख रहा था, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, ओके। दीपाली बेटा, आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है, आप साइट पे जाओ, ठीक है, वहां पे आपको दे रखा है प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, उसको क्लिक करो, आपके सामने सारे प्लान्स आ जाएंगे। आप उसमें सिंपली रेफरल कोड यूज करो, आपको PSH10 आप कोड यूज कर सकते हो, या किसी और एजुकेटर का, वट एवर यू वॉन्ट, उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ऑल राइट, इज दैट क्लियर? यस, ऑल राइट बेटा, कर लेंगे क्विज, हम कर लेंगे। इज दैट क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डिड पोस्टमास्टर हेल्प, सॉरी, हाउ डिड पोस्टमास्टर फील हेल्पिंग लेंचो? So postmaster felt the satisfaction. He was so content that he had performed a good deed. All right, so there was that satisfaction on his face. So please remember that. Alrighty, clear? Next, Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. Now, this is one of the very important things. When he was being given the envelope, there was definitely the amount in it. All right, there was not even one single, okay, doubt on his face that he would not have received the money. So this showed that his faith was unquestionable. Okay, he had an extreme faith in God. He was confident to the fullest that he would receive the money from the God. So the slightest, this is the superlative degree, all right, of adjective that we are using here. And with the superlative degrees of adjectives, we always use the article the. तो देयर वाज नो सरप्राइज, मतलब वो एक मिनट के लिए भी उसके चेहरे पे ऐसा शॉक नहीं था कि उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसको मिला पैसा, ठीक है। एंड यहाँ पे सेमीकोलन, सॉरी, सेमीकोलन आया है, क्यों? क्योंकि सेमीकोलन हम तब ऐड करते हैं जब हम एक बात से दूसरी बात पे स्विच हो रहे होते हैं, लेकिन वो एक मेन पॉइंट से कनेक्टेड हो। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? So now what happened is that he showed no surprise. All right, such was his confidence. That means he was fully confident. There was an extreme confidence. All right, his confidence was unshakable. All right, it was unquestionable. All these adjectives, they are important when we are going to write the answer. So please remember that. Okay, on seeing him. बट अब यहाँ पे डैश इसलिए दिया गया है क्योंकि अब हम एक डिफरेंट बात पे स्विच कर रहे हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल अलग नहीं था, बट क्या चीज अलग थी? But he became angry when he counted the money. So why did he become angry? This is very important. He was totally in anger. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. So this is one of the very important things that he decided. Like he was like that. He had received the money, and he had this thing in his mind. All right, people, if you guys are gonna talk among yourselves, I would really like to request you all to please move out of the class, because otherwise I'm gonna block you people. Okay, you will not have any access to my classes in case if you want to study further, if you change your mind, or if like something strikes you that studying is also important. All right. So, sweetie, my dear, you're blocked. And then we have someone else. Some other person is there. Alrighty. Abhi. Okay. Okay, Manju Devi, you're blocked too, dear. Okay, guys, so just concentrate on the very class. All right, if you're gonna talk about something else, I would not like to have you in my class. All right, so please be very serious about it, because we are doing something very serious. At the end, when the exam comes, you guys become so insane that you start going mad, and you ask for a lot of things, and therein there's no time. Okay, there comes no time that I can come up with the line-to-line explanation. So it's a golden opportunity for everyone right now to ask me the questions if you have any, and stay tuned. All right.
Sure, that's amazing, amazing. Okay, so he was very angry and he counted the money. He was very angry and he was so very much keen on this that God couldn't ever be, okay, doing anything wrong, and God could never be like this, that he is not fulfilling the demand that he made. So this show that he had a blind faith in God. Okay, he had such a great faith that he was like कि भगवान से तो गलती हो ही नहीं सकती है. It was like कि भगवान गलती कर ही नहीं सकते हैं और वो मना कर ही नहीं सकते हैं जो लेंचो ने डिमांड किया वो लेने से. Okay, so this is very very important. सिनोनिम बेटा निमेश, सिनोनिम होता है एक जैसा, ठीक है, और एंटोनिम होता है अलग अलग यानी ऑपोजिट. दैट्स इट, दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू राइट. ऑलराइटी. ओके, तो अब हम क्या देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है. इमीडिएटली लेंचो वेंट. आप क्या, उसे बहुत तेज गुस्सा आया. व्हाट डिड ही डू, वो फटाफट से विंडो पे गया, यानी कि पोस्ट ऑफिस की विंडो पे गया. वहां से उसने क्या मांगा, पेपर और इंक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट डिड ही आस्क, पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी कि वहां एक टेबल है जहां पे लोगों को अगर कुछ लिख के पोस्ट करना है तो वो कर सकते हैं. ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी कि वो ऐसे परेशानी के साथ लिख रहा था कि उसके यहाँ पे लाइंस बन गई थी. ठीक है, कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. तो यानी कि उसको अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने थे, वो सोच रहा था और वो ऐसे लिख रहा था. ठीक है, अब क्या हुआ, when he finished, अब उसने लिखना खत्म किया, he went to the window to buy a stamp, उसने स्टैम्प खरीदी, which he licked and then affixed to the envelope with the blow of his fist. तो उसने क्या किया कि उसको उसने अपनी टंग से उसको लिक किया. क्यों, क्योंकि उसे पेस्ट करना था. ठीक है, उसने पकड़ा, उसने अच्छे से उसको लिक किया और उसने उसको पेस्ट कर. ठीक है, क्यों, अफिक्स का मतलब होता है कि आप स्टिक कर रहे हो, आप अटैच कर रहे हो. ऑल राइट, इज दैट क्लियर. ओके, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी. ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उसको ब्लो दिया. ब्लो का मतलब ऐसे 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 उससे अपनी फिस्ट से, अपनी मुट्ठी से उसको ऐसे ऐसे मारा. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, यानी कि जैसे ही वो मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर, अब खुद से पोस्ट मास्टर गया उसको ओपन करने के लिए और उसने क्या कहा, कोलन फिर से आया. तो कितने लेटर्स आपको मिलेंगे इस चैप्टर में, 2 लेटर्स लिखे हैं. ठीक है, लेंचो ने 2 लेटर्स लिखे हैं. पहले लेटर में उसने डिमांड किया 100 पीसोस. ठीक है, दूसरे लेटर में उन्होंने क्या लिखा, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, यानी कि जो पैसा मैंने आपसे मांगा था उसमें से मुझे सिर्फ 70 पीसोस ही मिले हैं, यानी कि उसमें से मुझे सिर्फ 70 पीसोस मिले हैं. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. वो कह रहा है मुझे बाकी के भी भेजो, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है. All right, is that clear? Akanksha, hi there. Welcome to the very class. Please don't spam. All right, that is not at all like entertaining. All right, is that clear? अच्छा बेटा देखो, सिनोनिम का ना एक बेस्ट तरीका जो मैं बताती हूँ यूजुअली बच्चों को याद रखने के लिए, वो ये रहता है कि सिनोनिम एस से स्टार्ट होता है. ठीक है, और एस से आप रखो सेम. ठीक है, बाकी एंटोनिम आपको पता चली जाएगा, यानी कि ऑपोजिट. All right, antonym में याद कर लो. That's pretty easy. Hi Anushka, hello. Okay, Pallavi. All right. Why did Lencho try to find out why God? Try to find out why God? Why did Lencho didn't try to find out? This must be your question, Deepak, if I'm not wrong. Okay. All right. Hi Anushka. Hi dear. Hello. Welcome to the very class. Okay. सो आप क्या करते हैं, उन्होंने क्या बोला, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस. तो अब हमें यहाँ पे पता चलता है, earlier we came to know that a little more than half was being sent to him, alright, because they couldn't gather together the entire 100 pesos. But now we came to know that they were able to arrange just 70 pesos, which is actually a very great help. Okay, because they were totally the strangers and they were like giving something out of their salary to a person, alright, who was in dire need of money. Now he is like, आपने मुझे जितना भी पैसा दिया उसमें से मुझे सिर्फ 70 पीसेस आए हैं, बाकी का भेजो, मुझे चाहिए. बट उसने आगे क्या लिखा, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो. ओके, सो यू सी, क्रूक का क्या मतलब होता है, अ पर्सन हु इज डिसऑनेस्ट और क्रिमिनल, सो बेसिकली चीटर. So you see that here it is so ironic. What do you mean by ironic, everybody? All right. What do you, crook एक word है मैम, इस चैप्टर में एक word है bunch of crooks. निमेश, bunch of crook का यही मतलब होता है कि ये झुंड है चीटर्स का, धोखेबाज लोग हैं, ये धोखेबाज लोगों का ग्रुप है, धोखेबाज लोगों का झुंड है. bunch का मतलब होता है ग्रुप.
ठीक है, कि ये ग्रुप ऑफ चीटर्स हैं, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में पैसा मत भेजना क्योंकि इन्होंने मेरा पैसा निकाल लिया है. So what do we come to know? That Lencho was such an innocent and a naive person that he didn't even try to think the other way around, that someone else could have helped him. Why? Because he had a strong belief that no one could, that there was no one who could have helped him. He was such a strong and a staunch believer in God that he believed that he had received the help just from God. He was not thinking otherwise. So what do we come to know? That he was a very simple and an innocent person who had no clever mind. Okay, he believed that he had received the money from God. All right, he didn't think other way round. And according to him, all the people of the post office, I mean the employees of the post office, they were the group of cheaters, because he had this belief that God can never, okay, do any mistake. He could not deny him the 100 pesos. So he had this belief that the 70 pesos that the God had sent, 100 pesos, it's just that the 30 pesos were being kept by the post office employees. They are the cheaters, they are the thieves. Okay, so that is why he called them a bunch of crooks, which is so iconic. Okay, what do you mean by that? Like, which is ironic क्यों है? क्योंकि जिन्होंने हेल्प करी उन्होंने ही एक तरीके से गाली सुनी. All right, so they were the ones who literally helped him, and they were the ones who were being called crooks and the cheaters. So that was a shock to their hearts. All right, because they were so pure, they were so helpful. Even the postmaster was obliged to his several friends also who had sent the money in order to help Lencho. But in return, what did they get? They had got a very title of being the crooks. But herein we cannot say it was a mistake of Lencho, because Lencho was himself unaware of the help from the post office employees. Alright, anonymously the help was being given. Anonymously मतलब कि बिना किसी नाम और पहचान के उस तक हेल्प पहुंचाई गई थी, और लेटर को साइन भी किया गया था गॉड के साथ. सो दैट वाज सो एविडेंट दैट गॉड से ही सब आया, लेकिन उसको ये लगा कि मेल से आया है तो इन्होंने मेरा पैसा चुरा लिया. इज दैट क्लियर? समझ आया सबको? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? सो अब मैं आती हूँ टाइटल पे. तो जो टाइटल है अ लेटर टू गॉड, आयरॉनिकल है. आयरॉनिकल क्यों है? बिकॉज वी डोंट नो द एड्रेस ऑफ गॉड. ओके, यू डोंट नो वेयर टू सेंड द लेटर एंड इन रिटर्न गेट अ रिप्लाई, लाइक अ फिजिकल tangible reply. All right, so the title is very much ironical. All right, because the letter doesn't reach to God, instead it reaches to the post office, of course, and the help was being done by the post office employees. All right, so this is what you all will have to remember. Okay, is that clear? Is there any doubt? किसी को chapter में कोई doubt है? सारे word meanings important है. I want all of you to concentrate on the word meanings, because all the word meanings, they are important. Please don't leave any word which is not clear to you. I would suggest this on a very serious note. Make a notebook of your own self and start writing the words that you find difficult. Maybe like herein I have not written the meaning of a bunch. A bunch basically means a group. But if you are not aware of it, just let me know about it. All right, moral of the story is so simple that we need to always be very aware of our surroundings. Okay, we must not be judgmental before knowing the things. All right, so there, like, instead of just going into the moral, yeah, one more thing that I wanted to tell you all in this very particular story, which is what, just a minute, everybody. So there are the three things that are running in this very particular chapter. One, as I said, the theme of belief. Okay, trust. The next theme is, as I told you all, nature versus man. All right, that nature is going against man, and hence showing that nature is more powerful. And the third most important thing, which is really important in the context of the post or master and the Lencho scene, which is men versus man. All right, and how do we come to know this? Lencho, okay, he is against the humans himself. All right, how do we come to know that? Lencho, he had no belief that he could ever be helped from any human. All right, like in the very beginning when he was looking for help and he was completely devastated, what did he say? He mentioned that like there was no one who could help him.
All right. So there is men versus men. All right, this is very important, everybody. Are you all understanding this? Yes, not ma'am versus ma'am, Rajat. It's man versus man. All right, that human doesn't believe in human. Okay, and the two more important things, that faith in the chapter has been portrayed by the character of Lencho, and humanity in the chapter has been portrayed by the character of Postmaster. Please remember this already. These are the important things. Is that clear? Yes, Nimesh, that's absolutely right. Okay. दीपक बेटा, मैंने आपको बताया ना, पोस्ट मास्टर वॉज अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, अ काइंड हार्टेड पर्सन, एन एमिएबल पर्सन, दैट मीन्स अ फ्रेंडली पर्सन. जो आपके एडजेक्टिव्स आपके बुक में यूज किए जाते हैं वो हम अपने आंसर्स में जरूर यूज करते हैं. इज दैट क्लियर एवरीबडी? हाय श्रेया, हेलो, वेलकम टू द वेरी क्लास. यस, इज दैट क्लियर? सो अब मेरी जो स्पेशल क्लास है वो सही 2 बजे होने वाली है. एवरीवन डोंट मिस दैट. फटाफट से उसमें कोड PSH10 यूज करके आ जाना. सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में उसमें करवा दूंगी, ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, आंसर्स कैसे लिखते हैं जिससे कि मार्क्स ना कटे. तो मेक श्योर दैट यू आर वेरी क्लियर अबाउट दैट. बेटा पोस्ट मास्टर का कोई नाम नहीं है. ओके, पोस्ट मास्टर का कोई नाम नहीं दे रखा है. और कोई डाउट? आई एम गिविंग यू अ चांस टू आस्क मी द डाउट्स इफ यू हैव एनी. कम ऑन, बी क्विक. राजा बेटा वो हम स्पेशल क्लास में करें. ठीक है, स्पेशल क्लास में अभी तो मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी. कल हम मिंटी क्विज लेंगे 2 बजे. ऑल राइट, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? आयुषी बेटा कल करते हैं. Why Lencho was dissatisfied? Okay, प्रताप ने क्वेश्चन पूछा है, फटाफट से आप लोग मुझे आंसर दो. Why Lencho was dissatisfied with the employees of the post office? Tell me. Tell me everybody. Use of single comma क्या अभिलाषा? निमेश देखो, एक तो हमारे पास लेंचो है, लेंचो के बाद हमारे पास क्या कहते हैं, विमेन है. ठीक है, और बच्चे हैं. बच्चे कितने हमें नहीं पता है. ऑल राइट, एंड देन पोस्टमैन एंड पोस्ट मास्टर. सो इन टोटल 5. All right. He received 70 pesos. So yeah, see, the answer to your question is, where is the question? Why Lencho Pratap? Lencho was dissatisfied with the employees of the post office because according to Lencho, the god had sent 100 pesos. Okay, it's the people, it's the post office employees who had taken away 30 pesos from his envelope. All right, because he believed that he got his money. Okay, about character of Lencho, he thought that 30 pieces had been taken by them because he asked God for. Very good, Ayushi. Absolutely correct. Absolutely right. Okay, he thought that they took the money which was being sent by God. Right, Minu? Absolutely right. Anything else? Any other doubt, everybody? Do you have any other question? Yes, the story is really ironical. Ironical का क्या मतलब होता है? Irony होती है कि जब आप कुछ बोलना चाह रहे हो लेकिन उससे उल्टा हो रहा है. यानी कि अ लेटर टू गॉड, गॉड को तो लेटर गया ही नहीं. आपने टाइटल दे दिया है चैप्टर का लेटर टू गॉड. इसका मतलब कि एक लेटर जाएगा गॉड को. ओके, बट ऐसा हुआ नहीं है. लेटर कहाँ गया है? पोस्ट ऑफिस गया है. आप गॉड को तो लेटर भेज नहीं सकते हो बिकॉज यू डोंट हैव अ डेफिनेट एड्रेस. Okay, and moreover, how will you get a reply for that? Okay, so that is what the thing is. Alrighty, people. So let's make a move ahead. Everybody, the special class is going to be at 2 p.m. You know, all the special classes, they are super duper amazing. You all can learn from your favorite educators for free. You all can engage with educators via polls. You all can clear your doubts in the live special classes. So अगर कोई doubt है तो वहाँ पे मुझे मिलो, हम वहाँ पे interact करेंगे. जितनी भी मेरी top special classes है वो links में already available है. Alrighty people, okay, here we go. So 2 बजे हम लोग मिलते हैं everyone. NCERT के क्वेश्चन सारे कवर करवा दूंगी मैं. ठीक है, और लेटर टू गॉड का. And please make sure कि आप PSH10 कोड यूज कर रहे हो and you are meeting me there. Alright, it's a fiction dear, fiction प्रियंका, fiction है बेटा. ठीक है, सो गाइस मैं एक्सक्लूसिव प्लस कोर्स लेके आ रही हूँ. कंप्लीट कोर्स है इंग्लिश लिटरेचर पे. क्लास 10 का है, बैच 2022-23 का है. May 16, दैट इज फ्रॉम टुमारो स्टार्ट होगा 6:30 PM से. प्रेक्षा शर्मा ऑफ कोर्स मेरा नाम है. PSH10 आप लोग कोड यूज करो. ठीक है, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. कल से स्टार्ट हो रहा है. कोर्स इज गोइंग टू बी लाइक कंप्लीटली अमेजिंग. बहुत डिटेल में मैं आप लोगों के साथ ये पढ़ाने वाली हूँ. सब कुछ क्या कहते हैं, PDF नोट्स आंसर सब कुछ मिलेंगे. मेक श्योर दैट यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट. Alrighty, here we go. Now Bugs Bounty, everybody. Bugs Bounty में क्या है? It's an opportunity for all the learners to report any inappropriate content in the video. Be the first one to report a particular issue to claim your prize and report any inappropriate content using the form given in the description.
And guys, like the students who have just come into their ninth standard, please impart the information to your friends, everybody, to your juniors. We have started with the mastery batch for all the subjects. It got started on May 11. Okay, the mode of delivery going on here is in English. Make sure you're becoming a part of it. Then let's solve NCRE all subjects. May 18 is the date when we are going to start it. And the mode of delivery here is going to be English. So you can always make use of the code PSH10. All right, and go ahead with it for your good, for your best. Priyanka, thank you, dear. Heart attack, you're very late to say hi or hello to everybody right there. Shubham, hey, you're very late. Okay, everybody. Alrighty, Shubham, welcome. And then for all the 10th, everybody, we started with let's solve NCRE all subjects. Okay, this is going to be started on May 18. The mode of delivery is going to be English, absolutely. Okay, please be a part of it for your good. Start right from now. It's needed. Do not overburden yourself right at the end. Okay, everyone. And then the mastery batch. All right, for class 10, start date May 18 it is. Mode of delivery is English here. Please make sure you're becoming a part of it for your good. All right, why did the earth need rain? बेटा क्योंकि जब आपको बारिश आती है तो आपकी फसलें बहुत अच्छी हो जाती हैं. So for a farmer, like rain is very much important. तो वहां पे जो the earth आपको given था ना, उसका यही मतलब था कि उन fields को बारिश की जरूरत थी, उन fields को पानी की जरूरत थी. That is what he meant. All right, is that clear? Okay. Now moving ahead, guys, we have got a big announcement for everyone right there. We are soon going to increase the prices, so act fast to save now. कल से मेरा कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है. ज़्यादा डिले मत करो, सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी. PSH10 कोड लगाओ फटाफट से, 10% ऑफ मिलेगा. It's Sunday today, everybody. You all can discuss with about this with your parents because you need to study right from the very beginning for your good so that you're not at a miss for anything. Alrighty, so in Iconic, what are we providing you all? We are providing you all personal guidance. You all can get one-on-one guidance from the top exam experts. Then we'll be having the test analysis. You all will get one-on-one guidance from the top exam experts again. Study planner would definitely be there. Alright, you all can get customized study plan with bi-weekly reviews. And study material would also be there. Specialized notes and practice tests, which are very, very important. Experts guidelines would be there. Study booster workshop by exam experts. And in Plus, we are going to provide you all the live classes, weekly tests, structured courses, and unlimited access would be there, which is a very great plus point. All right. So if you're going to go ahead with Iconic, of course, you're going to get the benefits of Plus as well. So think wisely, think for your good. Alrighty, everyone. Okay. And now we have got different plans. आपको जो अच्छा लगता है आप उसके साथ जाओ. Be it 48 months, 42 months, 36 months, 24 months, 18 months, 15 months, 12 months, 9 months, 6 या 3 months. ठीक है. आप कोड यूज करोगे PSH10, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% डिस्काउंट मिलेगा. Being your educator, being your well wisher, I would really like to tell you all, try to go for a longer tenure. That's always beneficial. A lot of my students, they have subscribed for a longer tenure and they get a lot of benefits. So please take the decision wisely, think wisely, and make sure you're meeting me in the very plus classes. Okay, and for Iconic also, we have got different classes. You all can go ahead with anything that suits you the best, be it 48 months, 36 months, 24 months, 18 months, 15 months, 12 months, 9 months, 6 months, or 3 months. PSH10 is the code. Apply it. Guys, you can apply this code anywhere, wherever you need it. Okay, for your good, for your betterment, because that's going to be really, really helpful for you guys. Okay. So we have community, everybody. Make sure that you're following me on the app and you're meeting me right at 2 p.m. today also for the special class where I'll be providing you all the answers for your NCRD questions. So never miss any update from your favorite educator. Get these sessions, notes, and practice material. Share your feedback directly with educators via polls and check out the link to the educator community given below. Alrighty. And Bugs Bounty, as I told you all already, and I hope that you all attended this amazing webinar today by the great ultimate mentors Ashish Arora sir and Anuja Arora ma'am. Alrighty, wherein we talked about, I mean the sir and the ma'am, they talked about the key factors for success in competitive exams. So you can always crack your competitive exams along with your schools, okay? You can understand the common mistakes learners do in their academic journey. You can implement the effective study techniques to achieve maximum output.
in available time. So this is really, really important. Whenever we come up with such sessions, make sure that you are definitely going ahead with these things. Okay. So I hope that you all love the session, everybody, right? Any other question do you have, everyone? Okay, P Studio, fine. Priyanka, that's my pleasure. Geeta, thank you, dear. Any other question you have from the very chapter? Anybody, you all can just let me know about it in the comment section, because I'm keeping an eye on that. Anyone? So tomorrow we are going to have a Menti quiz right at 2 p.m. Don't miss that. That's gonna be the entire test for all of you. Like, how well you understood the chapter. Okay, Pratap, great guys. So thank you everybody. I hope you really enjoy the very session. Do not forget to like the session. Of course, share it with all your friends. And if you're new to the very channel, kindly subscribe it. Okay, we are gonna meet soon in the very special class. Use the code PSH10 and be right there, guys. All right.